on YouTube channel, and so that you can easily see all the lectures where you can easily see later on. Okay, if you want to clear your concept, if you want to see something, okay, if you have missed out anything, then you can also refer from the YouTube channels. And one more thing is that our my YouTube channel is linked. My videos are linked with the institute channel also. Okay, I think e-repository computer department ऐसा कुछ नाम है, so you can get the name exactly. Um, I will inshallah tell you the name of that particular channel, so you can get it from the website also. We have put the link on the website also. You can simply click. You can go to the website aikdc.ac.in. Just go to that particular link, and you will be redirected to that particular channel. Okay, so let it be. So let us starting with the first chapter. Okay, as I told you that we have six chapter total. Okay, we'll be revising the thing first. So we are going to start the officially we're going to start with the operating system first chapter. Okay, this all these are the chapters. Okay, operating system overview, process and process scheduling. Okay, and then synchronization and deadlock, memory management, file management, IO management. Okay, so if you will consider, if you will see, then all these chapters are nothing but the component of operating system. Okay, we have one topic, small topic. Either that particular topic has been removed from your syllabus, but still all these are nothing but the component of operating system. We were having in the last, I think in the previous scheme of syllabus, we were having one topic that is component of operating system. Still, we will try to see that particular topic also, because those topics were important because it creates the base of the operating system. Okay, so so all these chapters are nothing but the component of operating system. So if you will imagine, then you can easily see that we have an operating system. An operating system, we are having the different modules, we are having different boxes, and all those boxes are these six chapters. Okay, and all these are interconnected with each other. Okay, so ये जो सारे के सारे हैं, you can consider, you can imagine them as a box, and all these boxes are connected with each other, and you can imagine कि भाई हाँ ये operating system connected. Okay, so all these chapters are nothing but the component of operating system. Okay, we'll see each and every chapter one by one. Okay, let us start with the first chapter. So first, in first chapter, we are going to learn about all this topic. Okay, as I told you. Uh, Okay, so introduction, objectives, functions. Okay, then evolution of operating system. We were having multi-user, multitasking and multi-threading, and उसके बाद में फिर हमारे फिर RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बीच बीच में आए. ठीक है, पहले एक जॉब एक टाइम पे सबमिट की, उसको प्रोसेस की, एंड आफ्टर दैट फिर सोचा गया कि भाई व्हाई वी कांट सबमिट टू जॉब्स. ओके, व्हाई वी कांट एग्जीक्यूट टू जॉब्स साइमल्टेनियसली. तो ऐसे होते होते वो उसका इवोल्यूशन, दैट इवोल्यूशन विल सी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टारगेट थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक है आज के लिए. सो विल सी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, the objectives and the functions and the component of operating system. These four topics we are going to cover today. Okay, after that I will be covering the layered and monolithic kernel and microkernel. These are the different operating system architecture. So I told you that one question is always there from this particular topic, like the operating system structure. Okay, so हम लोग ने already देख चुका है, but for before starting each and every chapter, I will put this particular slide so that you will come to know, okay, these are the topic we are going to cover in our chapter. Okay, so let us start with the first one. Start with the introduction. Actually, I've already started the introduction, but still, okay, देखते हैं. So it acts as the interface between the user and the hardware of computer. Okay, so as discussed on that day also, that it will act as interface between the user, okay, यानी कि मैं human, and the hardware of my computer. Okay, so my operating system is the one from which I will be able to use all the resources which are available in the computer. Okay, अगर operating system नहीं होता तो I will not be able to use any kind of operation, any kind of task I cannot perform. Okay, as you also know. So this is the very basic and the common definition which is always floating amongst all the people, all the students, all the colleges. के भाई
It acts as an interface between user and hardware of a computer. Okay, so this is a very common definition whenever you will be asked what is operating system. So it's an interface, okay, between user and hardware. Okay, अब hardware किसका दायरी बात है, hardware आपके computer का. Okay, so this is the very common definition for operating system. It also controls the execution of application program. Okay, now what is this application program? Application programs are nothing but the software or whatever applications we have already installed in the computer system. So it is going to control the execution of all these programs. For example, I have opened my computer. Okay, as you know, in Windows you can see my computer in which all the drives and you can see all the files and folder which you have placed in the drives. You can easily see from that particular my computer. Okay, then also you are having MS Office. Okay, MS Word you are using. Okay, then you are using Paint also. Okay, for drawing something. You are having VS Code just for the coding purpose. You have Android Studio. Okay, you are going to build one application. So you are having all these applications. Okay, so there's one person like operating system who is controlling all these applications. इस my computer को, इस paint को, एंड देन बाद में आपका VS कोड को, और फिर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो को, ये सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, सो इट आल्सो controls the execution of different application programs which are executing in our computer system. Okay, the things are very common. Just try to understand कि ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है. Okay, but still as a जो part of the syllabus we are learning all this thing. ठीक है, and अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं आपको पूछूं किसी को बिफोर दिस लेक्चर, तो आप में से हर कोई बोलेगा हाँ सर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल वगैरह, ये सब बोलेंगे. ठीक है, but we were not having the formal definition. So now we have received the formal definition. Okay, what is exactly it controls the execution of all the programs which are running in my system. Okay, so ये चीजें हम लोग को थोड़ी थोड़ी इससे समझ में आती है. तो एक लॉजिकली हमको सारी चीजें पता है. ठीक है, बट नाउ वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं, और एक एक करके उनके डेफिनेशंस, उनके स्टेटमेंट हमको याद है. सो ये किसी को बोलना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, so you will need all this. Okay, the next OS, that is operating system, is also called as resource manager. Operating system is also called as resource manager. So why it is called as resource manager? Because the resources which I'm having, my computer is having right now. Okay, so it is managing that particular resource. देखो आगे चल के आपको मतलब काफी सारे रिसोर्स को हैंडल करना मतलब आएगा उसके अंदर. लाइक वी आर हैविंग रिसोर्सेज, इनपुट आउटपुट के अंदर हमारे पास में बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर रिसोर्स होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं. अब आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर रिसोर्स के अंदर बेसिकली वट एवर एप्लीकेशन विच आर इंस्टॉल्ड इन माई कंप्यूटर सिस्टम, सो दैट आर एप्लीकेशन रिसोर्स. ओके, दैट इज सॉफ्टवेयर रिसोर्स. और उसके बाद में फिर मेरे पास में जो डेटा है, वट एवर डेटा आई एम हैविंग, लाइक आई एम हैविंग माई डेटा. ओके, मेरे फाइल्स है, मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स है, मेरे फोल्डर्स है. ओके, मेरे कुछ वीडियोज है, मेरे कुछ MP3s है. Okay, so all those are nothing but the data resources. Okay, so whenever I will be clicking on that particular folder, okay, then it will show you that particular folder and the required file. जो भी इसके अंदर फाइल है वो आपको शो करेगा. Okay, आपने मांगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको शो किया. ठीक है, so as and when required, it will show it will display all the resources whatever is there in your computer system. So it is all about the data resources, software resources. Okay, hardware resources. Okay, you are connected with the printer. Okay, so you are connected with the printer. Okay, you required it, so you have connected. For example, अगर आपका network printer है, so it will be called as the hardware resource. Okay, so hardware resource को हम लोग basically क्या कर पाएंगे? Hardware resources को multiple people can use. Okay, for example, network printer आपका connected है. If I'm using that particular printer, at the same time can someone else can also use, but थोड़ा एक के बाद में एक use कर पाएंगे. Okay, so these are the hardware resource. And any other kind of for example कोई और resource है
तो वो रिसोर्स को भी हम लोग नेटवर्क के थ्रू यूज कर पाए. So I mean to say that if we are having these lot of resources like software resource, hardware resource, data resource, okay, network resource, so all these resources are being managed and being controlled by the operating system only. Okay, so this is the reason why it is called as the resource manager. Okay, because वो कौन कर रहा है, मुझे ये फाइल्स सामने लाके मैंने एक वीडियो फाइल पे क्लिक किया तो उस वीडियो फाइल को उसने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्ले किया, कोई और नहीं था, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्ले किया. तो आप बोलेंगे सर उसको तो वीएलसी ने प्ले किया, बट वीएलसी कहाँ रन हो रहा है, वीएलसी एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है, वीएलसी का एग्जीक्यूशन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. Okay, so my operating system is the one who is executing that application program named as the VLC, and VLC is displaying the output. तो सबके पीछे बेस कौन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so these three statements are very important. Whenever you will be called for the operating system, please explain what is operating system. Then first of all, you need to explain the definition of operating system. It acts as a interface between hardware and the user. मतलब user मतलब आप खुद, और हार्डवेयर मतलब आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर. तो दोनों के बीच में तालमेल जमाने के लिए यू नीड वन ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नीड वन इंटरफेस, एंड दैट इंटरफेस इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. Still I'm repeating all this statement again and again so that मैं चाहता हूँ आपको एकदम ये चीजें एकदम पक्की हो जाए. ओके, सो दैट यू वोंट रिमेंबर कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकंड, एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करेगा. थर्ड, रिसोर्स मैनेजर भी इसे कहते हैं. Okay, so these are very very basic thing. All these ये आपके फर्स्ट चैप्टर में जो चार टॉपिक आज लोग आज कवर करने वाले, those are very very simple, and you will even if you will see in the book then you can easily get it. Okay, but still we are covering as a part of the syllabus. Why? The second question, why operating system, again we have already seen, because in the discussion we have already covered this point also, that why we need operating system. Okay, so as I told you that अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं तो still you can easily answer the question that why we need operating system. सर ये रीजन है, ये रीजन है. ओके, हमें हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है, हमें अपने डेटा को देखना है, एंड देन हमको फिर क्या करना है. ऐसे बहुत सारे काम आप लोग गिना सकते हैं. उसी को हम लोग थोड़े से ऑफिशियल फॉर्म में we can put some points that these are the reason why we need operating system. Okay, so as you can see, your operating system is everywhere. Okay, and because worldwide everywhere it is using, whether it is Linux operating system, Windows operating system, Android one. Okay, any operating system you are using, but everywhere this operating system is being used. There is the popularity of operating system everywhere. So yeah, that's the very first reason why we are using operating system. Second, we can say ease of management. Again, the same point is repeated, but still as a point, as a part of the syllabus, we इसको cover करना. Okay, ease of management. Okay, why? What is the thing which we are managing? I told you just now that we are having different types of resources. We are having software, data, hardware, different types of resources, and in order to manage all these resources, we need operating system. So there's a second reason why we are using operating system. Okay. Can someone please tell me that am I going too fast? मैं एकदम स्पीड में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, मैं पेस थोड़ा कम करता हूँ, स्पीड कम करेंगे हम लोग. No, sir. Actually, yes, thank you so much. Actually, these things are very simple, and you can easily understand in the very first sitting only. So that's why I'm going too fast. Okay, when there will be requirement, then I'll go slow. Okay. So everywhere ease of management, then provide services. Okay, we have one more topic in this particular. I think there's no. Let me see. Operating system services name. In the last scheme, in the CBCS scheme, we were having one topic as operating system services. Okay, if it is possible, then I will tell you the services of operating system also. I have that services. I will tell you what are the different services of operating system. It was a question in CBCS scheme, but now in C19 scheme, US scheme, that particular topic has been removed from the syllabus. But still, I will show you. Okay, so coming back. It provide lot of services. Okay, चलो अब बात जब निकली है तो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ. So we have different types of services which has been provided by the operating system. Like it provide user interface.
it provide user interface. Second, it provide execution of program. हालांकि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हर जगह पे रिपीट होते हैं, बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पहले स्कीम में ऐसा था कि ये टॉपिक था, सिलेबस में टॉपिक था, so you need to consider this topic and the question was expected from this topic also. 5 मार्क के लिए what are the different services provided by the operating system. Okay, अब लिखते बैठो आप लोग. I have sorry, I have actually mentioned around 8 to 10 services. Okay, मैं खाली आपको नाम गिनवाता हूँ, बाद में नोट्स में मेंशन कर दूंगा, then you can easily get it. Okay, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा because this topic has been excluded from your syllabus. The first is user interface. I'm just talking about the services of operating system. What are the different services provided by the operating system? One is user interface. Second, program execution. आपके program execute करवाता है, service है भाई. IO ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप लगाते हो अपने कंप्यूटर में. इनपुट डिवाइसेस आपको पता है कौन से, आउटपुट डिवाइसेस कौन से आपको पता है, ठीक है. सो दोस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यू कनेक्ट विद योर कंप्यूटर, सो इट गिव्स इनपुट एंड आउटपुट, तो आप लेते हो, ठीक है. तो IO ऑपरेशन को मैनेज करता है, ये भी एक सर्विस है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की. देन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम फाइल मैनेजमेंट है. कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज कम्युनिकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग वाया नेटवर्क बात भी कर पाते हैं, मैसेज चैटिंग एंड ईमेल वगैरह, एवरीथिंग. कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. एरर डिटेक्शन, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर इन योर सिस्टम देन इट विल पॉप अप, आपको बताएगा कि देयर इज एरर, देयर इज अ डिस्क एरर, देयर इज अ प्रॉब्लम. ये भी है, आपको डिस्क सॉरी आपको एरर डिटेक्शन करके देगा. दैट्स वन सर्विस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. Then resource allocation. Okay, resource allocation में as I told you that we are having different kind of resources. So these जो आपके different resources है, इन resources को किसको allocate करना है, किसको देना है. और फिर for example आपने आपने माई कंप्यूटर ओपन किया. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर आपने ड्राइव पे आपने क्लिक किया, आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह वगैरह जो भी रहेगी, आपने डी ड्राइव पे क्लिक किया, तो डी ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो आपको शो करेगी. तो ये डी ड्राइव का डेटा जो ये कैसे आया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपकी हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये सेक्टर का डेटा जरा हमको बताओ, बिकॉज हमारे यूजर मांग रहे हैं. तो आपके यूजर मांग रहा है, इसके लिए आपने आपके आपके माई कंप्यूटर जो आपकी एप्लीकेशन थी, इसने रिसोर्स मांगा, आपके स्टोरेज को मांगा, स्टोरेज ने लाके आपको दे दिया, ठीक है. तो उनका अंदर आपस में उनकी चलती है. तो रिसोर्स एलोकेशन, किसको क्या रिसोर्स देना, सो दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग, देन प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सारे इसके सर्विसेज है. आई विल मेंशन ऑल दीस सर्विसेज इन वन स्लाइड एंड देन आई विल गिव इट टू यू आल्सो. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाई, ठीक है. सो इट प्रोवाइड दीस लॉट ऑफ सर्विसेज, सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम. Point where hardware and software meet and many more. Okay, so I think I must ask you people also that if you have anything in your mind, like why we need operating system apart from these points, then please let me know. Now it's your turn. Someone from your side, please. अरे भाई मैं ही बोलूंगा खाली तो कैसे चलेगा, आप भी तो बोलना चाहिए कुछ. एक मिनट रुक गया मेरा. Sir, does OS work with system languages library before accessing hardware? OS work with system language library, obviously, before accessing hardware. There is a communication between each and every part. जो भी आपके हार्डवेयर रिसोर्स है, जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, जो लाइब्रेरीज है, whichever जहाँ पर भी प्लेस्ड है, so all they are having their communication with each other. Internal communication होता है. We have one topic which will come later, I think in the third or fourth chapter. That topic is IPC, inter-process communication. Okay, so each and every process communicate with each other, and then they share whatever is required to share with each other. So obviously they communicate, okay, and then only the things are getting processed. We're talking about any reason why we need operating system, why we are using operating system apart from these points. If you have anything, please
come forward. Multitasking. Okay, very good. बोलते जाओ, बोलना चाहिए, आप लोग की तरफ से आंसर आना चाहिए. Raman sir. Excuse me. Process management. एक second. Sorry for the disturbance. Actually, कोई याद नहीं था. Okay. So आप लोग के आंसर्स आए, मैं देख नहीं पाया. Sorry. Consistent user interface. Okay. CPU scheduling, process management, multitasking, file management, consistent user interface. Good, very good. At least आप लोग बोलेंगे, so मुझे भी अच्छा लगेगा. Okay, so all these are the different point why we are considering operating system, why we need operating system. Okay, so going ahead, चलो आगे चलते हैं. डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, यस यस यस. ये सारी चीजें हमारे ओएस इसके अंदर आ जाएंगी, ओएस फंक्शंस में आ जाएंगी. हालांकि सिक्योरिटी एंड मेमोरी मैनेजमेंट. वेरी गुड. सो आपने जितनी चीजें बोले ना, तो ये सारी चीजें आप लोग के ओएस सर्विसेज में आ जाएंगी, सॉरी ओएस फंक्शन में आ जाएंगी. ओएस हमारा क्या क्या फंक्शन. हालांकि अगर देखा जाए तो why we need operating system, because it is performing these number of tasks. Why we need operating system? Because it perform these number of tasks. Okay, and these tasks अगर perform करता है तो उसको हम लोग easily दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, these are the functions which is being performed by the operating system. तो इसका आंसर उसका आंसर सेम हो जाता है. तो इसके लिए उसने काफी सारी चीजें रिमूव भी किया है, because काफी सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी. So will be coming after this particular topic. Will be coming on the functions of operating system, in which whatever you have listed, we will mention. Okay. So coming to the next topic, that is operating system. Types of software. Okay. So these are very small topic, just for the refreshment and तो हम लोग को इस बारे में पता रहे. Most of the people you are having already, you are having idea about the types of different types of software, but still as a part of the syllabus we are just going through this topic. Okay. So coming back to the topic, there are types of software. Okay. So coming to the very first type of software, because मैं थोड़ा इसको एकदम lightly ले रहा हूँ, because हमको इसमें से हर किसी को इसमें से idea है what is basically the different types of software. Because अगर हम लोग बात करें आपके operating system की, अगर मैं honestly बात करूँ operating system की, तो operating system is itself is a software. ठीक है, ये खुद एक software है. Okay, और ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, तो हम लोग ये भी देख लेंगे. ठीक है. So basically, we are having three types of software which are being used by us. Okay, which are being used by the user. Okay. So the very first is the system software. Okay. The very first is the system software, in which your OS falls. Okay. This is the system software, compiler, loader, linker. So all these ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे SPCC. अभी आप लोग 4th सेमेस्टर में 5th 6th है, तो 6th सेमेस्टर में यू हैव वन सब्जेक्ट SPCC. ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर डिजाइन ऐसा करके सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक subject है. In this particular in that particular subject you will learn about this compiler, interpreter, assembler, editor. ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है. ओके, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं इनके, तो ये सारे बहुत सारे काम करते हैं. और कंपाइलर इंटरप्रेटर तो यू नो ऑलरेडी, बिकॉज हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं. सो प्रोग्राम कंपाइल, तो बेसिकली वहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि जिनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है, इनसे 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 हमारा डायरेक्ट लेना देना नहीं होता. ठीक है, so they work for us. Okay, they work for our application and provide some services to the application. एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं. ओके, like you are having MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Okay, these are the application. You have Paint is one of the application. Okay, you are having any Android Studio, you are running your Android Studio, that is one application software. These are also called as application program. This is also called as application program.
application program and application software. This is the second type of software. Okay, in operating system we consider it as the second type of software, and all these applications are very commonly used by us. Okay, तो हम लोग इसको डेली इसमें यूज करते हैं. Sublime editor, text editor यूज करते हैं. Okay, आपने Eclipse यूज किया, so this is one of the application software और application program. Okay, तो ये चीजें आपकी second टाइप में आती है. Coming to the third one, that is utility software. Okay, आप लोग देख के तो समझ गए होंगे. Okay, utility softwares are required in order to optimize your hardware. Okay, so basically हमारे पास में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, और अगर आप लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं. ओके, because it improves your hardware. Okay, and it will drive your hardware. Basically, I mean to say, it will drive your hardware and improve the performance and optimization of your hardware. ठीक है, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो दो सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. वही क्वेश्चन स्पेस पे आता नहीं है, बट as a part of operating system, we must know that these are the different types of software. So one is system software, second is application, and third is the utility software. SAU, system application utility. SAU. ठीक है, SAU. So you will remember. This is one of the Viva question. Okay. What are the different types of software? What is system software? Okay, system software example. Application software क्या होते हैं example? And what is utility software? Okay. So basically आप इनको definition बता सकते हैं. ठीक है, simple है. आगे चलते हैं. These are the objectives. हालांकि ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले जैसे नहीं है, बट स्टिल अब आ रहे हैं तो हम लोग इनको कवर करते हैं. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स पे आने के बाद हम लोग फंक्शन करेंगे. सो कन्वीनियंस, कंप्यूटर्स कैन बी यूज कन्वीनियंटली बिकॉज देखा जाए तो सारे पॉइंट्स एक ना एक के बाद में कहीं ना कहीं पे सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे आपके, बट टॉपिक थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा याद रखो इसको. ओके, so in operating system we are having these objectives, objective behind operating system. So convenience. Okay, so computer can be used conveniently. क्या समझेंगे हम लोग इससे? वही चीज है जो हम लोग ने पहले टॉपिक मतलब पहले जो स्टेटमेंट कवर की वही है. All the resources, all the hardware and software resources can be easily conveniently used by the user. Okay, तो आपका एक ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए behind operating system. Operating system एक तो हम लोगों ने वो टॉपिक देखा, why we are using operating system, and these are the objectives behind operating system. So काफी हद तक दोनों मैच कर पाएंगे. ठीक है, so convenience is the one objective that computer, and मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने कंप्यूटर लिखा हूँ, but in computer you will have to consider the hardware and the software resources of the computers can be easily conveniently used by the user. Okay, so this is the one objective we are having for operating system. Efficiency, resources can be used in the efficient manner. Okay, so because मैं आपको इसके लिए ज्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, because when we will be coming to the second topic, second chapter, that is the process management and process scheduling. Okay, in that you will come to know that if we are executing multiple application, like I'm running my Android Studio also, and I'm running my Eclipse also. Two applications are running, and also I've opened my computer. ठीक है, तो ये तीन मैंने एप्लीकेशन ओपन किया. ठीक है, so what is happening in the background? Okay, so for these three application, one process will be created. Okay, whenever you will execute, whenever you will double click on any of the application, one process in the task manager will be starting. ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोसेस उसके नाम का स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्ट होने के बाद में वो जब तक चलेगा तब तक आपका एप्लीकेशन चलेगा. आपको भी पता है ये चीज. एंड अगर आपको उसको डायरेक्टली जाके होता है ना, कभी कभी हम लोग ने किया भी होगा, काफी लोगों ने किया होगा आप में से, कि अगर कोई एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रहा होगा, so you might have closed that particular application by going to the task manager and just kill that application. अगर उसका एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको टास्क मैनेजर में जाके अगर आप उसको किल करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो जब एप्लीकेशन आपके रन होते हैं तो उनके प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते हैं.
और उन प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन मल्टीपल प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एफिशिएंट मैनर में देने का काम भी मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। So we can set our objective that this is one objective. It provide efficiency in order to provide the resources to different processes. अभी मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला, शायद आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे वो चीज समझ में आएगा। तो एफिशिएंसी याद में रखो। सो ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? द कन्वीनियंस एंड सेकंड efficiency. Ability to evolve. Okay, it allows efficient development, testing. Multiple tasks can be performed on an operating system. So objective हमारा ये देखो, for example मैं बोलूँ कि आप कंप्यूटर क्यों ले रहे हैं? What is your objective? If someone is planning to buy one new laptop or computer, then I would ask him कि भाई तू क्यों ले रहा है कंप्यूटर या लैपटॉप क्यों ले रहा है? What is your यूज? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? वो बोलेगा मुझे सिर्फ सॉन्ग सुनना है, मुझे वीडियोस देखना है, मुझे पिक्चर्स देखना है, और मुझे खाली एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। So the configuration, as a computer student or as a computer background person, you will suggest any other specification computer जिसका ज्यादा बजट नहीं है, जस्ट सिंपल टास्क है। एक ऑफिस वाले के लिए आप दूसरा सजेस्ट करोगे, एक गेमिंग पर्सन के लिए आप दूसरा सजेस्ट करोगे। ओके, बट एक अगर टेक्निकल बंदा है, उसको ये सारा कोडिंग करना है, उसको एमएल के डेटा सेट रन करवाने हैं, और सारे मतलब ट्रेन करना है, डेटा सेट ट्रेन करना है, ऑल दैट, अगर ये सारे काम है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन का लेना पड़ेगा। सो आर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एफिशिएंट डेवलप Sir, there is no voice.
Sorry guys, actually I got disconnected. Am I audible now? Okay, okay. Actually, I was connected with my mobile, but actually because of connectivity issue, I got disconnected. It's okay. We'll continue. We have still 3 minutes in our hand. And, presentation going on now. Okay. Okay, so we're talking about the objectives, okay, and we're running on the last topic, that is ability to evolve, and we can have multiple tasks, multiple things can be performed on the operating system. So what are your objectives? Okay, so based on the objectives we can have the categorization. So this objective we can set, okay, and we can have many more objectives for an operating system, okay, but I mentioned only few, okay. We can have more objectives. If you'll find the book also and the internet or any other textbook, you will find number of objectives of operating system will be there, okay. So just for the understanding purpose, I've taken only three, that is convenience, efficiency, ability to evolve, and all that, okay. So I hope these topics are enough, okay. We should go on with the functions of operating system, okay. Functions कुछ ज़्यादा नहीं है. Functions I'll just show you the uh, I'll just list out the function. What are the different functions are there for operating system? So the very first is process management, okay. As someone told that the process management is one of the tasks, okay, because we are running, and our operating system is executing number of processes. Our operating system is executing number of processes in the computer. So in order to manage all these processes, this it is also called as traffic controller, okay, the traffic of the processes. So all these processes are being managed by the operating system. So we can consider it as a function of operating system, okay. So we'll be covering the first one, that is process management, for the second chapter. Then you will easily understand and you will learn a lot of things about this process management, okay. So as I told you that we are running a lot of application at the same time. We are not the people who run only one application at a time, because हम लोग same time पे हमारे Chrome भी open है, my computer भी open है, और हमारा VS Code भी open है, हमारा Studio भी open है, okay. So multiple windows and multiple applications are running at the same time, okay. And if we are the multitasking user, then this process management is very important for us, okay. So this is the very first function which is being performed by the operating system. It particularly manages all the processes, okay. Second is the memory management, okay. So you know that we are dealing with the memory, okay, and we are having RAM, ROM सब है हमारे पास में computer के अंदर, and every application when it is being executed by us, so that particular application requires memory also, because in order to execute these particular processes we required memory. So कब किसको memory देना है, कब किससे लेना है, कब किसको कितनी देना है, कहाँ से कहाँ तक देना है, everything is being managed by the operating system. So this is, I can say, this is the second function which is being performed by the operating system, okay. So because we are going to learn in depth we are going to learn about all these function. So I'm just covering all this topic very fast. The third is file management. Again, files and folder, in going to we have to manage all the files and folder of our computer system which are placed in the secondary storage. तो उन सारे फाइल्स एंड फोल्डर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, ओके. आपने देखा होगा when we double click on any word file, तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो फौरन हम लोग को मतलब ओपन होती है. तो अभी फाइल को ओपन करना, कहाँ पर कौन सी लोकेशन में स्टोर्ड है, वहाँ से लेकर आना, आपको बताना. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय द फाइल मैनेजमेंट, ओके. उसके बाद में है डिवाइस मैनेजर, ओके. बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड एज आईओ कंट्रोलर. आईओ कंट्रोलर इज नथिंग बट इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोलर, ओके. So whichever input and output devices which are connected to my computers are being managed by the operating system, okay. So this is one more function of operating system. Then coming to the protection and security, okay.
सो आपको पता है हमारा सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ऐसे मैलवेयर से बचाएगा, फायरवॉल क्रिएट करेगा एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को, डेटा को सिक्योरिटी मिलती है and our data will be protected from any harmful activities. Okay, so this protection and security is also provided by the operating system. If someone of you are there, then you might have seen in the Windows 10 the security has been increased. Okay, so every time in a day or two, or after 2-3 days you will get an update, okay, from Windows. सो विंडोज 10 में इतनी सिक्योरिटी अभी टाइट कर दिया उसने कि आपको हर कुछ दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा. सो उससे काफ़ी डिसबैलेंस भी हो जाता है, लेकिन दोज आर हैविंग लाइसेंस कॉपी, सो दे आर गुड, they will be receiving lot of updates from Windows. So regarding protection and security, your Linux is also good, and your Mac is too good. Okay, so regarding protection and security, this is the one function which is being performed by the operating system. User interface भी आपका एक function है, because every time when we open or when we use any kind of application, so some sort of interfaces are being provided, and this particular things are being also managed by the operating system, because हमारा operating system ही है जो इन सब का user interface हम लोग को देता है. ठीक है, अदरवाइज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम अपने वर्ड को कैसे यूज कर पाएंगे, आप बताओ भी. अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम अपने पेंट एप्लीकेशन को कैसे यूज कर पाएंगे. सो ये यूजर इंटरफेस भी आपको प्रोवाइड करता है. देन बूटिंग कंप्यूटर, cold and warm booting. Okay, someone from your side, can anyone explain what is cold and warm booting? कोल्ड एंड वार्म बूटिंग, पहले कोई बताओ कोल्ड बूटिंग क्या होती है. लिख के मत बोलो यार, सीधा मतलब ओरली. अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आंसर. कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आंसर नहीं आया. ओके, सो बेसिकली कोल्ड बूटिंग इज नथिंग बट आपका सिस्टम शटडाउन है, एंड यू आर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर. यस, समवन वाज आंसरिंग. हाँ सर, वही शटडाउन से टर्न ऑन करने को कोल्ड बूटिंग बोलते हैं. ओके, वेरी गुड. आपका नाम क्या है? Daniel. Yes, Daniel. And warm booting is like restarting computer. Very good. So cold and warm booting are very simple term used in the operating system, in the field, in the domain of operating system. Cold booting is nothing but starting the computer when it was in the shutdown condition, and warm booting is the booting restarting the computer when it was already on. Okay, तो ऑलरेडी ऑन था मतलब वार्म था, और वार्म था मतलब आपने इसको बूटिंग की, तो वार्म बूटिंग है. और कोल्ड बूटिंग मतलब आपका सिस्टम ऑलरेडी शट डाउन था एंड आपने इसको स्टार्ट किया, तो कोल्ड बूटिंग. सो दिस बूटिंग ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, द वेरी सिंपल वन. ओके, आते हैं नेक्स्ट वन. इट परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क लाइक मैनेज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, अदर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. तो ये क्लास पॉइंट मैंने लिख दिया था ऐसे. ठीक है, so these are the different function. Apart from these particular function, most of the function you will find everywhere in every book, on internet also, but you may find different function on different places. Okay, so ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी functions हो सकते हैं. So I'm not saying that कि यही function है, इसके अलावा कोई function नहीं, और भी दूसरे functions हो सकते हैं. But just for the writing purpose, for the examination purpose, we can write from these functions. Okay, so operating system के सारे functions हैं. So let me cover what we have done today. We have started with the overview or the introduction part, and we have seen the basic statement of operating system. Then why we need operating system, we have seen some basic reason. Okay, then we have seen different types of software. We have seen 3 different types of software: system software, application software, and utility software. Coming to the objectives, we have seen only 3 objectives. Okay, we may have more objectives of an operating system. Then in last we have seen the functions of operating system. I hope you people have understood these topics. Okay, so introduction part, why, the reason, types of software, objectives, and functions of operating system.
I hope you people have understood what we have done and what we have covered today. Okay. Anyone wants to say something? Mapari Simran, please share the recording with me. Okay. You're